तो लॉकडाउन में तो यू मस्ट बी लविंग इट। या मेरे लिए कुछ बदला ही नहीं है, सब कुछ सेम है। आई एम परपेचुअली इन लॉकडाउन मोड। यू नो, हम सबको पता है कि कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली इन मुंबई। You already know there's another dance reality show where so many people have been affected. When you step out of your house and go on sets at this point of time, what is the fear? Because you have to come back to children, your wife. Please tell me what is happening. तो लोग तो अभी मतलब ऐसे हो गए कि या तो भूखे मरेंगे या तो कोविड से मरेंगे। सो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, हर कोई चांस ले रहा है, हर कोई काम पे जा रहा है, घर तो बैठ नहीं सकते। तो मेरे नाक चौड़े हो गए टेस्ट करवा करवा के, सीरियसली। बिकॉज क्या होता है, आप हर शूट के पहले करवाते हैं और शूट के बाद भी करवाते हैं। सो you have to get tested. फिर भी हो रहा है कोविड। I think everybody is taking precaution and they are getting, every unit member is getting tested before the shoot, and after the shoot when we come home we again get tested. You know what, actually I sleep in my office for 24 hours before the test comes, then I enter, फिर मैं घर में घुसता हूँ। तो ये तो चल ही रहा है, और लेकिन फिर भी cases are, is baffling how with all the precautions which every unit is taking. I've been also shooting in between for television commercials and everything. There are people on set, everybody is tested, but still we find some cases, you know, coming up, popping up later on. So it's just baffling. You don't know how it's happening. It's every time, you know, you have to go with plan A, B, C. You know, for even when we're doing TVC, you know, one casting, double casting. This character is not. If kuch ho gaya to story mein, you know, you have a backup plan to carry on the story with somebody else for television show. Cut. We have, for example, Super Dancer. We have contestants, you know, in backup. Or contestants, we have backup contestants which we have announced after the last episode of auditions, I think. So ये सब तो करके रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये we hope Super Dancer में अभी तो कोई cases नहीं आया, and I hope ना आए, you know, and we've been very cautious in all these episodes. लेकिन फिर भी I think पर शूटिंग तो चलती रहनी पड़ेगी यार, there is no other way, because you know ये सारे जो डेली वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, and they make 75% of the unit actually. And it's for them. The rest 25% have to be really, really, really careful for those 75%, and they have to also be careful. Also because of this, theaters बंद हो गए हैं वापस से। पूरे साल में सब theatrical release के लिए ready हो चुके थे. All the dates were given, big films were announced. I was talking to theater owners, the exhibitors were looking forward कि बड़े film release होंगे तो लोग आएंगे theater में. For example, Suryavanshi, or you know, big films like that. And producers also, you know, they are going through so much of loss. As a producer, how do you see the industry at this situation right now, and how is it suffering? No, exhibitors, producers, everybody is started pinching now. अभी तो चल गया था, लोग रुके हुए थे. अभी now, you know, delaying things further will actually really, you know, my heart goes out to exhibitors. Yeah, you see they are still maintaining the staff and infrastructure of PVRs and Inoxes. There are stalls, samosas बन रहे हैं, coffee shop चालू है, लेकिन लोग नहीं, nobody is going there. So I don't know, it's very really tough, you know, and इसका जो backlash है, ये मतलब, you know, we'll have to 5, 6, 7 साल लग जाएंगे to come out of it, the loss they have made. And I hope it ends soon, and we have to actually find producers. तो क्या है, for example, हमने तो अपना रास्ता निकाल लिया, you know, OTT में रिलीज कर दिया. So we found a way out. फिल्में बना, चलो यहाँ तो नहीं, यहाँ there are so many avenues to, you know, exploit your revenue in today's time. But yeah, theater owners, they are suffering a lot. Yeah, कुछ तो करना पड़ेगा, पता नहीं. Now let's come to Super Dancer. आप मुझे बताइए, बचपन में ये जो डांस करने का कीड़ा कभी था, लेकिन मैनेज कर लेता था. मेरे स्कूल में तो मुझसे बेहतर डांसर्स बहुत सारे थे, लेकिन हाँ, it was, I used to be part of every dance crew in childhood in school, but I was not very good. You know, it is season 4 now, and Super Dancer का आप मुझे ये बताइए, how difficult is it to judge a kid? So मैं अपने डायरेक्शन का जो एक्सपीरियंस है ऑन सेट, वो मैं लेके आता हूँ, वर्किंग विद डिफरेंट कोरियोग्राफर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. सो नो, वी डोंट, आई नेवर जज. हु आर वी टू जज? या इतने छोटे बच्चे लोग इतना कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है. मोस्ट ऑफ द टाइम, या वी टॉक टू द choreographers who are choreographing them. They're adults, so sometimes, you know, we can give suggestions to them, but we never, you know, I can tell you for Shilpa and Geeta, हम लोग कभी जज करते ही नहीं है और कर भी नहीं सकते. I'm sure ऐसे बहुत सारे मोमेंट होंगे जहाँ पे you are stunned
but ऐसा कोई memorable moment, just not about the dance, you know, it's about the story also. Can you tell me anything, something like that, any experience? एक्चुअली बहुत सारे कहानियां हैं, मैं अभी नाम थोड़े शायद भूल जाऊं, लेकिन जैसे हर्ष हर्ष नाम था शायद, वो यू नो he couldn't hear but he would dance in rhythm. That was amazing. Matlab just by some vibration he used to get from stage or somewhere, I don't know, his every step was on sync, but he couldn't hear. He was hearing impaired boy, I know, and इतना अच्छे से डांस करता था. When you're on sets and you're working with the biggest stars in the industry and you know such good dancers, uh, but you are here, the judge of one of the judges of Super Dancer, what do they have to say about that? Ki dada mane tumi to না না অনেক uh, you know what, honestly, প্রথমবার যখন এটা ফার্স্ট টাইম, you know, when they said for me to judge this show, I used to judge a show called India's Best Dramebaz. It has to do with theater and performance and acting and drama, and it was my area. जब ये डांस शो आया, it was the same crew who was doing this show, who was doing Dramebaz. तो मैं उनको बार बार बोलता कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बट जैसे दादा कर लो 10 एपिसोड फिर देखते हैं. सो आई वाज इन एलिस इन वंडरलैंड, या फर्स्ट होल सीजन, आई एम टेलिंग यू, मुझे कुछ नहीं पता हो रहा था क्या हो रहा है. मैं बस बैठ जाता था ऑडियंस के लिए, और अभी भी मैं वही करता हूँ. मुझे ये लगता है कि मुझे फ्रंट रो की सीट मिली और मैं ऑडियंस हूँ, स्पेक्टेटर हूँ, और मैं ये कमाल कमाल के परफॉर्मेंसेस देखता हूँ. तो मुझे तो मेरी जगह क्या है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया. इंडस्ट्री से कोई ऐसा कोई इंसान जो आपका फेवरेट डांसर हो? मुझे बताया रणबीर होगा. रणबीर तो ही है और एफर्टलेस है वो, एंड इसीलिए रणबीर मेरा फेवरेट है. और डुगू भी है, ऋतिक रोशन, ही इज आल्सो माय फेवरेट डांसर, इज वेरी गुड. One of your films, Barfi. Now Barfi is so different. So how difficult was that choreographing specially abled people? Because you have to keep in mind that they are specially abled. We had a production controller, he used to always dance off sync. कुछ अजीब अजीब स्टेप करता था, उसका मतलब गाना कहीं जा रहा है वो कहीं और जाता था. So it just happened gradually. A night before the shoot, we all were drunk and he was dancing, our production controller. और रणबीर क्या होता है, जब वो डांस कर रहा था, when he is hearing music, you kind to follow your body is it's in our system, we tend to follow the rhythm, and you know body moves like that. But Barfi cannot do that, right? So we asked that production guy to stand behind the camera and dance to the music, and he was perpetually offbeat, and Ranveer just copied him. That's it. We asked Ranveer to also copy kar or kar de. The whole bird step, it was his step. Wow. 2 peg down and he start dancing like that. Wow, this is a lovely story. But last, I have to ask you, sir, what is the next project that you're working on? Please tell me something. मेरी बीवी रोज पूछ रही है কি হলো কিছু হয়েছে এত তো অফিসে যে বসেছিলে 3 দিন কি লিখলে কিছুই হচ্ছে না. তাই তো সত্যি রে বাবা, কি করব বুঝতে পারছি না. সব তো হয়ে গেছে, সব তো করে নিয়েছি, এবার কি নতুন করব मुझे कुछ नहीं पता अभी क्या होने वाला है. बोलो प्लीज बोलो. না সত্যি আমি এমনি মানে বলবো কি, আজকে যদি বলে দিই আর কালকে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে. এটা তাই হচ্ছে. That is so typical Anurag Basu, no? That is typical Anurag Basu. So आज के I'm excited and tomorrow that doesn't excite me anymore. So यही चल रहा है, पता नहीं, it has to end. I have to put a full stop and just announce and my next film. I'll do that very soon. Thank you so much. It is always lovely talking to you, Anurag sir. Thank you.